Everyone, hi, this is Karan Singh from GSEB Gandhinagar. Welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to study about one phenomena or one property of basically the refraction that is known as refractive index. Okay, so in the last lecture, when we were observing the law of reflection, the Snell's law, we came to know about the refractive index. So what is refractive index? Okay. The refractive index is basically a ratio, okay, of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Okay, fine. So suppose this is a glass. Okay, in this glass, what is the speed? Like suppose I am comparing it with air or vacuum. So if you compare with vacuum, we call it as the absolute refractive index. Okay, that refractive index is known as the absolute refractive index. So suppose I am comparing the speed of light in this glass and the speed of light in air. So I will have two speeds. The ratio of those two speeds will be known as the refractive index. Clear? So this is the refractive index formula. You can see here that is denoted by small letter n. Okay, the symbol of refractive index, the ratio of speed of light in a given pair of medium, velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. Okay, clear? So this is known as the refractive index. But if you use vacuum or air, then you call it as an absolute refractive index. Okay, fine. Now, how will you see? How will you judge that basically the medium is denser or not? Okay, from the ray diagram. So I will be helping you to understand that. Okay. Now it is, I have taken an example of optically denser medium. Optically denser medium is the density of the medium. Okay, suppose we are using a glass A. Glass A is a transparent glass. Okay, so optically denser medium and is basically a glass that is a black tinted glass. Okay, it is a black tinted glass. So what will happen when the light will enter? Okay, you will find that the light is getting attracted. Okay, it is turning towards the normal. You see, actual में light कहाँ जाना चाहिए था? ये line था, right? This should be the line, but it has turned around towards the normal. Okay, तो जब भी light यहाँ पे क्या हुआ? Light आया दो medium. Okay, कौन से दो medium है? Air to glass. कहाँ जा रहा है? Air to glass. Air हमारा क्या है? Rarer medium है और हमारा glass क्या है? Denser medium. Air is basically the rarer medium because the density is less than the glass. So air is the rarer medium and glass is the denser medium. So here what is happening? The movement is from air to the glass. मतलब rarer से कहाँ जा रहा है? Denser में. तो rarer से denser में आया. ये हमारा मान लो ये वाला portion air है, ये portion हमारा glass है. N1 is हमारा air and N2 is glass. So when the light is entering from rarer to denser, you see that the ray is moving towards normal, right? Now see the difference. When it will move from a denser medium to a rarer medium. Here, it is the denser medium, it is the rarer medium. Means it is the glass and this is the air. So what will happen? It will move away from the normal. Clear? Whenever, understand this point, whenever a light ray is passing from a rarer medium to a denser medium, it will move towards normal. And when it is moving from a denser medium to a rarer medium, it will move away from the normal. Clear? So this thing you need to understand how the light will be moving. Denser में denser से rarer में जाओगे तो away from the normal. Rarer से denser में आओगे तो towards the normal. Clear? So this is how the light deviates. Okay, the ray of light deviates. Now we have the next topic as the spherical lenses. In the last part, we studied about spherical mirrors. Here we are going to study about spherical lenses and most importantly the convex and concave lenses. I have given here many figures, but these two figures are the figures which we are going to deal with. And even these are the few of the shapes, okay, that those are used in different applications. But these are the two things we are going to use. This is our convex and this is our concave. Okay, the scientific other name is also biconvex and biconcave because there are two surfaces, okay, those surfaces. That's why it is known as the biconcave and biconvex. Okay, so let's see the difference. Convex lens, concave lens. Here you will find a very interesting thing. These all properties will be exactly opposite of the property of concave and convex mirror. जो वहां concave mirror की property थी, यहाँ पे आपको बहुत सारी property किसकी दिखेगी?
कॉन्वेक्स में, और जो वहां कॉन्वेक्स में थी यहां पे आपको किस में दिखेगी, कॉनकेव में. बट प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो हमारे पास कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स क्या होगा, थिन फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर पे बहुत थिन होगा. थिक फ्रॉम द कॉर्नर, पहचानने का तरीका, कॉर्नर पे थिक है. थिक एट द सेंटर, सेंटर में थिक है, और थिन एट द सेंटर, पतला है सेंटर में. दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग. वहां पे क्या था, मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था. यहां उल्टा है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है. ओके, क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, एंड देयर इज अ प्रॉपर डिफरेंस आई हैव shown here. You can see here that there is a proper difference. I have mentioned here a convex about the thickness, the converging point. It produces convex क्या produce करता है, real image, okay, and virtual भी करता है लास्ट केस में. यहाँ पे सिर्फ ये क्या करेगा, virtual image. देखो पूरा उल्टा हो गया. कॉनकेव मिरर क्या करता था, रियल इन्वर्टेड, बट यहाँ पे कौन कर रहा है, रियल इमेज. ओके, यहाँ पे कॉन्वेक्स कर रहा है. इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. ओके, जिनको दूर, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया पास का प्रॉब्लम होता है देखने में, उनको ये लेंस होता है. और कॉनकेव, जिनको मतलब आप दूर का नहीं देख पाते, उनके लिए ये कॉनकेव लेंस की ट्रीटमेंट में यूज होता है. दिस थिंग यू कैन यूज एज द डिफरेंस हियर. Okay, now we will start, we'll see one more topic, that is basically the nomenclature, जो रे डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेगा. In nomenclature, we have first, this is the convex lens. nomenclature किस तरह से है मैं आपको बता देता हूं. nomenclature में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. इस पॉइंट को O को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. इस डिस्टेंस को एपर्चर कहते हैं हम. ठीक है, देन हमारे पास क्या है, देखो एक, किसलिए ऐसा पड़ा है, देखो ये एक कर्वेचर है और इस साइड में भी एक कर्वेचर है. ओके, एक कर्वेचर इस साइड से है और एक कर्वेचर इस साइड से है. इस साइड के कर्वेचर के लिए 2 पॉइंट है. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, हमारे मिरर से कंपेयर करें, तो ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ फोकस की जगह पे F1 लिखा गया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह 2F1 है. अब इस साइड का भी होगा, इस साइड में क्या होगा, जो पोल है तो उसको हमने, आपका फोकस है, हमने उसको F2 दिया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या दिया है, 2F2. क्लियर? इस तरह से नेमिंग होगा रे डायग्राम बनाते वक्त. और यहाँ पे एक और चीज भी ध्यान देना है, O से F1 का जितना डिस्टेंस है, F1 से 2F1 का भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए. O से F2 का जितना डिस्टेंस है, F2 से 2F2 का भी डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए. क्लियर? एंड सेम उसके नीचे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है कॉनकेव लेंस का डायग्राम है. क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज अ डाइवर्जिंग. आप देख सकते हैं रेज डाइवर्ज हो रही है. फाइन. सो ये जो आपको नॉमेनक्लेचर है, आपको रे डायग्राम बनाने के टाइम पे आपको हेल्प में आएगा. फाइन. सो यहां तक हमारा टॉपिक खत्म होता है आज के लिए. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम रे डायग्राम पे वर्क करेंगे लेंस का. आई होप आपको सब समझ में आया हो. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.